Bismillahirrahmanirrahim. Well, students, the next topic is factors causing changes in a habitat. कौन से वो factors हैं जो कि this is article topic 4.3.1. The last topic that we covered was about habitats. We discussed about what are the various types of habitats and what kind of plants or animals etc. live over there. Today we are talking about the factors that cause changes. किसी भी habitat में कौन से वैसे factors हैं जो कि उसके अंदर तब्दीली ले आते हैं. So before you proceed towards that, get this little things into your mind. We know that abiotic factors are light. आपको ये पता है कि जो नॉन लिविंग है, abiotic का लफ्ज़ जहाँ पे है उसका मतलब है नॉन लिविंग, जो जिंदा नहीं है. Abiotic factors are light, रोशनी होती है किसी भी habitat के अंदर. टेम्परेचर होता है मौजूद दर्जा है जिसमें कि ज़िंदगी मुमकिन हो. हवा होती है एयर, सॉइल ज़मीन की ज़रख़ेज़ी है, and water. These are the factors in any habitat which are abiotic factors. कोई भी जगह जो है, चाहे grassland हो, चाहे desert हो, चाहे वो aquatic life का हो, या कोई पहाड़ हो या कोई रेन फॉरेस्ट हो, इन सब में जो फैक्टर्स नॉन लिविंग हैं जो चेंजेस लेके आते हैं उस हैबिटेट के अंदर, विच आर रिस्पॉन्सिबल ब्रिंगिंग चेंजेस इन दैट, आर लाइट, टेम्परेचर, एयर, सॉइल, वाटर. दे आर बिसाइड्स, इनके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट इन दिस. चेंजेस इन दीज ब्रिंग चेंजेस इन द पॉपुलेशन ऑफ हैबिटेट. इनके अंदर जब तब्दीली आती है, यानी रोशनी बढ़ जाए या टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए, हवा कम हो या ज़्यादा हो, सॉइल ज़रख़ीज़ी उसकी कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, पानी की कमोबेशी हो जाए, दिस कैन ब्रिंग चेंजेस इन द पॉपुलेशन ऑफ हैबिटेट. सम अदर ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स. अब हम इसके बाद पढ़ते हैं इसके अलावा कौन से फैक्टर्स हैं किसी भी हैबिटेट में. ह्यूमन फैक्टर्स भी जो हैं दे आल्सो अफेक्ट द टू ब्रिंग अ चेंज इन द हैबिटेट, एंड नेचुरल फैक्टर्स भी कुछ होते हैं विच ब्रिंग अ चेंज इन द हैबिटेट, which we will be discussing later on. Sunlight, this factor, the abiotic factor, sunlight is the basic source of energy. यानी सूरज की रोशनी एक बुनियादी चीज़ है और जो तवानाई ज़मीन को देती है. The basic source of energy on earth. Plants use light. Plants, you know that they use light to make food, photosynthesis process. All forms of life on earth depends upon green plants, and all green plants use sunlight. Plants also need light for survival. Plants को भी रोशनी चाहिए for the survival. Light intensity, if the light is more, it affects the number of plants in a habitat. जितनी ज़्यादा रोशनी हो उससे प्लांट लाइफ इफेक्ट होती है, कम हो उससे इफेक्ट होती है. डिक्रीज इन प्लांट्स पॉपुलेशन मे रिजल्ट इन डिक्रीज इन एनिमल पॉपुलेशन. प्लांट्स की पॉपुलेशन में अगर कमी हो जाए तो फिर एनिमल्स की पॉपुलेशन भी कमी होती है, बिकॉज एनिमल्स लिव ऑन द प्लांट्स. दे ईट, घास खाते हैं, बकरियां, शीप एटसेट्रा, बफलोज घास खाती हैं. अगर घास कम हो जाएगा तो फिर वो एनिमल लाइफ में भी कमी वहाँ पे हो जाएगी. Another factor is temperature, which we discussed over light. Over here we discussed how light can affect the life on that habitat. All can bring changes in that habitat. So temperature is another one. Can affect population of a habitat. Temperature, गर्मी का बढ़ जाना, कम हो जाना, वो population को affect करती है. एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज डिक्रीज. अगर टेम्परेचर किसी भी वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली जो है गैर मामूली तौर पर बढ़ जाए या कम हो जाए, इट कैन डिस्टर्ब द हैबिटेट. वार्म वाटर contains less, if temperature starts rising and the water that the animals have to drink and other birds have to drink, that becomes little warm. Warm water contains less oxygen, so the oxygen content decreases in it. When it gets decreased, aquatic life is disturbed. The fish, the animals that they take water, that all gets disturbed. Water is also very essential for life. More water, this content of abiotic life. More water means more organism. पानी जितना ज़्यादा होता है उतनी ज़्यादा है organism बढ़ता है. Then migration also changes the size of habitat. Another factor जो है जो बहुत अहम है, ऊपर हमने डिस्कस नहीं किया, we are discussing it now, is about migration. माइग्रेशन जब वहाँ से जानवरों का किसी हैबिटेट को छोड़ के चले जाना, इंसेक्ट्स का छोड़ के चले जाना, बिकॉज वहाँ पे खुराक कम है,
या वहाँ पे इंसानों का आ जाना या वहाँ से चले जाना, that can also affect the size of the habitat. When a few individuals come to an area, when some people come over there or some living things come over there, it increases the size of population in an area. This results in migration of organism. जैसे जैसे जो है ना उसमें आबादी के बढ़ जाती है तो खुराक के ऊपर इफेक्ट आता है, तो फिर माइग्रेशन टेक्स प्लेस. सो माइग्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स दैट ब्रिंग्स चेंजेस इन अ हैबिटेट. वी आर डिस्कसिंग व्हाट आर द फैक्टर्स दैट ब्रिंग चेंजेस. सो अपार्ट फ्रॉम दोज चैप्टर्स लाइक लाइट, टेम्परेचर, air, etc., this is also one of the factors that affects it, which is migration. This results in migration of organism in search of better living conditions. आपने मुख्तलिफ टीवी के प्रोग्राम में दिखाया होगा, नेशनल ज्योग्राफिक भी दिखाता है, इसमें एनिमल वर्ल्ड दिखाता है, how elephants are moving from one place to another in search of water. Similarly, many other animals, they start migrating from a certain area. Natural disasters, कुदरती आफात जो होती हैं, they are also one of the factors which change the habitat. Natural disasters like drought, मतलब कि ये खुश्क साली है ना हो जाना, ये भी इफेक्ट करता है नेचुरल हैबिटेट को. Floods affect it, earthquakes affect, etc. They bring big changes in the habitats. Drought, what does drought do? Drought is a period where no rainfall occurs. अगर किसी जगह पर बारिश ना हो, लगातार ना होती ही नहीं है, मैं समझा जैसे कि हमारा एरिया था कि एरिया में पिछले पूरे साल बारिश नहीं हुई. इफ देयर इज नो रेनफॉल, देन व्हाट हैपन? ड्राउट हैपन्स. उसमें कहत आ जाता है, उसमें खुश्क साली हो जाती है. वाटर इन पॉन्ड्स ड्राइज अप. पानी पॉन्ड्स में जिसको पीते हैं, जानवर भी पीते हैं, इंसेक्ट्स भी पीते हैं, इंसान भी पीता है पानी. खुराक को भी जो प्लांट्स लगाए उनको देते हैं. दैट गेट्स ड्राइड अप. प्लांट्स डाई, एनिमल्स डाई, और दे माइग्रेट. So these factors affect the habitat. Floods, if it comes, that also affects the habitat because it kills plants and animals. Flood water, when it comes, it takes away everything. Earthquakes also affect. The earthquake of 8th October 2005, it killed animals, plants and human beings. And it affected about 70,000 human beings. 70,000 human beings were killed in that. So earthquakes, the natural disasters, they also affect are one of the factors which affect the change in habitat. Now I have an assignment for you which says, how is sun important to us for food supply of an ecosystem? You will write about this thing कि सूरज किस तरीके से जो है ना वो अहम है कि आपके जो है ना वो फूड सप्लाई फ्राहम करता है किसी ecosystem के अंदर. So you will write this thing. This is all found in the book. You don't have to do any extra work. If you intend to do it, you may do it, but it is found in the book also. Explain why limited life is found in desert. And then second assignment is कि बताएं कि deserts में जिंदगी कम क्यों है. Why is limited life found? Why don't people live in deserts? Why don't so many animals and plants and things, etc. are not found there? Why is it a dry? So what are the factors that affect limited life in a desert? This is the second assignment. Think about it and do it because it might come in the exams. Okay, now I recapitulate the whole topic again for you, and it says, topic 4.3.1, it talks about the factors causing changes in a habitat. What are the factors that cause change in a habitat? So we know that abiotic factors like light, temperature, air, soil, water. We know that these are abiotic factors. Changes in these abiotic factors brings change in the population of the habitat. Some other human and natural factors are also responsible. So कुछ तो ये factors जो कि changes लाते हैं habitat पर कौन से हैं, वो ये वाले factors हैं, light, temperature, air, soil. तो इसके अलावा कौन से factors हैं? They are human and natural factors. Human factors कौन से हम भी आगे पढ़ते हैं, natural factors हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़े. Sunlight यानी सूरज की रोशनी जो है is the basic source of energy on earth. Plants use light to make food. All forms of life on earth depends upon green plants. Plants also need light for survival. Light intensity affects them. So plant जो है ना, सूरज की रोशनी जो है ना, ये plants जो है ना, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड बनाते हैं. यानी जिस वक्त तो वो सूरज की रोशनी दे वो फूड बनाते हैं. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए उनको रोशनी चाहिए होती है. फिर जितना प्लांट्स ज़्यादा होते हैं उस हिसाब से एनिमल लाइफ होती है, जिसकी जितनी वो रोशनी कम हो जाए उसके हिसाब से प्लांट्स कम हो जाते हैं. डिक्रीज इन पॉपुलेशन, प्लांट्स पॉपुलेशन मे रिजल्ट इन डिक्रीज इन एनिमल पॉपुलेशन. दूसरी चीज़ जो है विच इज़ इम्पोर्टेंट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर कैन ऑल्सो अफेक्ट द
पॉपुलेशन ऑफ हैबिटेट जितना ज़्यादा हो जाए कम हो जाए उससे इफेक्ट होता है. लाइक चीन में क्या प्रॉब्लम है, वहाँ टेम्परेचर है ना -40 डिग्री सेल्सियस तक होता है. विद द रिजल्ट दैट डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर डिक्रीजेज द हैबिटेट. Temperature also affects the population of habitat. Any extraordinary increase or decrease in temperature may disturb the habitat. Water is a very important source for survival. पानी पर हम जिंदा नहीं रह सकते. This is essential. Water also causes the changes in habitats. Migration, then migration यानी कि किसी जगह पर population का निकल जाना या आ जाना, इंसानों के point of view से, जानवरों के point of view से, all kind of migration they affects the size of the habitat. When a few individuals come into an area, it increases the size of the population in an area. This results in migration of. अगर migrations किसी habitat से क्यों होती है, मतलब लोग वहाँ से बाहर कब जाते हैं, जिस वक्त वहाँ फूड सप्लाई कम हो जाए, और बाहर से अंदर वहाँ कब जाना शुरू होता है, जिस वक्त देखते हैं कि यहाँ पर खुराक ज़्यादा, better living condition. Therefore animals also, human beings also, they migrate. So migration is one of the factors that brings changes in habitat. Then natural disasters like drought, floods, earthquakes can also affect to bring changes in the habitat. Drought क्या होता है? It's a long period of no rainfall, और ponds dry होते हैं, plants मर जाते हैं, animals मरना शुरू होते हैं या वो migrate करते हैं. Crops stop growing in a drought area, और मज़ीद वो फसलें नहीं लग सकती वहाँ पे. Floods जो हैं, this also affects the habitat because वो बेशुमार plants को, animals को मार देता है. Earthquakes, it's one of the big reasons why habitats gets destroyed. Like जो 2005 का ज़लज़ला आया था, उसमें कश्मीर के एरिया में बहुत नुकसानात हुए, इस्लामाबाद में नुकसान हुए. It affects the habitats. The 8th October 2005 earthquake killed animal, plants and human beings. So with this I give you an assignment now, and the assignment is why is sun important to us for food supply of an ecosystem, and the second is explain why limited life is found in deserts. Please make your notes, do these assignments, go through these topics that I've covered just now, and if you have difficulty, call me on the number that I've given you.